Hi everyone, how are you? This is Rana sir. Welcome to our Rana sir educational channel. Today I will talk on a topic whose name is Kepler's law of planetary motion. So in this topic I will explain its three law in detail. So you concentrate here on this live video from starting to end to develop your knowledge on this topic. Simultaneously you also like this live video and also you share this live video with your colleagues, friends and students so that they can also update their knowledge on this topic. Simultaneously you also subscribe this education channel more and more. Now one additional information I am going to tell you and you have to follow it positively. First of all, you have to take one notebook and one pen and then you write all informations which are written on the blackboard, and also you have to write those informations which are spoken by me. Okay, you have to follow it positively, properly and safely. Okay student, now I am going to start this live video, that is this video, so you concentrate here to know its concept in detail. This is the class 11 physics that is available in both medium, that is in English medium and also in Hindi medium. First of all I will explain in English, so students who are reading in English medium, that is in CBSE board, those students can understand its concept in detail. Topic name is Kepler's law of planetary motion. In Hindi that is also called ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियम. ओके, सो केपलर gives three laws. All these three laws I will explain one by one. That is, first up law is the law of law of orbit, second is the law of area, and third is the law of period. Okay, so all these three concepts I will explain one by one. Okay, and this is also based on NCRT pattern. Okay, now topic name I have already discussed with you, that is Kepler's law of planetary motion. Okay, that is ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियम. ओके, नाउ केपलर gives three नियम, that is Kepler gave three नियम्स. First नियम I know, that is the law of orbit, second is the law of area, and third is the law of period. So all these three topic I will explain in detail. Okay, and then after explaining I will also translate all those informations into Hindi, so student who are reading in Hindi medium or in UP board, those students can understand its concept in detail. Okay, now first law I am going to explain, that is law of orbit, that is कक्षा के नियम. Okay, now this niyam is saying as it states that all planets move in elliptical orbits. All planets move in an elliptical orbits with sun at one of the two foci of the ellipse. It means that all planets, here written all planets which are moving on the elliptical path, all planets which are moving on the elliptical path, but this ellipse has two foci. Foci is the singular noun but focus is the
plural noun. So here there are two foci. One foci is F1 and other foci is F2. Now, if I am considering one planet, if this planet is moving, so all planets are moving around the sun. It means that if planet is moving around the sun, so during that time, sun is only one in the in the universe. So that sun will be located at one foci of two focus. That is one foci of two foci. So at one instant of time, that sun is situated at one foci of two foci of the ellipse. So this is the first law of Kepler's. This is the Kepler's first law, that is the law of orbit. If any planet which is moving on the electrical path, in during that time, sun will be situated at one point, that is sun is located at one point of two foci. So ellipse has two foci. One foci name is F1 and other foci is F2. In this case, sun will be available at one foci of two foci when any planet which is moving around the sun. This is the first law of Kepler. That is Kepler first law. I will say this is the Kepler first law, that is also called the law of orbit. Okay, student, I hope that you are understanding all these informations clearly. So students who are reading in English medium or in CBSE board, those students can understand its concept clearly, because if any planet which is moving around the electrical path, but that ellipse has two foci, so during the movement of the planet, that sun will be located at one foci of two foci of the ellipse. Okay, this is the first law of Kepler. Yeah, this is the law of orbit. I will also say this is the law of orbit. So here I have drawn two axes. This is the axis along the x-axis. I will say this is the major axis, but a axis which is parallel to the y-axis, I will say this will be the minor axis. So here minor axis I have written here. This is the minor axis. This is the minor axis already I have written here, and this is the major axis already I have indicated here. Now on the major axis I have taken two foci of the ellipse. When this this is the planet, this planet is moving around the sun, during that time sun will be at one foci of the two foci of the ellipse. Okay, student, I hope that you are understanding all these informations clearly. If you are understanding, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic positively. Okay, now all these informations I will also translate into Hindi, so students who are reading in Hindi medium, those students can understand this concept in detail. Okay, students, so positively I am going to explain it. Now second, first of all I will translate all these informations into Hindi, so students who are reading in Hindi medium, those students can also understand its concept in detail. Okay, now Kepler's लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में कहा गया है, इसका हिंदी यह होता है ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियम। केपलर के तीन नियम है। पहला नियम जो होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है, इसको कक्षाओं का नियम कहते हैं। जब हम जानते हैं कि ये 8 ग्रह होते हैं, ये सभी ग्रह जो होते हैं इलिप्स इलिप्स मतलब दीर्घवृत्ताकार पाथ पर ये मूव करते हैं। तो दीर्घवृत्ताकार पाथ पर जब मूव करेंगे तो हम उस दीर्घवृत्ताकार पाथ का जो इक्वेशन हम लिखते हैं, यह जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 सॉरी
which is equal to 1, x square divided by a square, b square, y square divided by b square, which is equal to 1. This is the general standard equation of the ellipse. Now a, the value of a I will consider along the x axis, and value of b I will consider along the y axis, and along the y axis I will take minor axis, and along x axis I will take major axis. Okay, now when there are 8 planets which are moving on the electrical path, 8 planets जो होते हैं, जो सन के जो होता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो अगर हम ये जो ग्रह होते हैं, जो प्लेनेट्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल पाथ पर मूव करते हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि उस इलेक्ट्रिकल पाथ के 2 फोकस होते हैं। एक फोकस को F1 कहेंगे, दूसरे फोकस को F2 कहेंगे। इसको सिंगुलर नाउन में हम कह सकते हैं फोकी, तो फोकी कहेंगे। जब प्लेनेट जो होता है मूव करता है अराउंड द सन, तो उस केस में 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर सन जो होता है लोकेट होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है उसके चारों तरफ वह प्लेनेट जो होता है मूव करेगा। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ। ये जो होता है केपलर फर्स्ट लॉ के इंफॉर्मेशन होता है कि अगर कोई भी प्लेनेट मूव करता है तो उस इलेक्ट्रिकल पाथ के 2 फोकस होते हैं, 2 फोकी होती है, उस दोनों फोकी में से किसी एक फोकस पर सन जो होता है लोकेट होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स या केपलर्स फर्स्ट लॉ। आई विल से दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। This is also the law of orbit. Okay, so I will also write its elliptical path in general form, that is x square divided by a square plus y square divided by b square, which is equal to 1. A is also taken along the major axis and b is taken along the minor axis, so its coordinate I can write, that is 0 comma b and 0 comma minus b, and also a comma 0 and minus a comma 0 I can write. This is the coordinate of these 4 points of the elliptical path. Okay, and this is the center of the ellipse. Okay, now second Kepler's law I will also explain in detail. Okay, now first law I hope that you are understanding clearly. Okay, state all planets, there are 8 planets which are moving around the sun at least, that is one is the, पहले ग्रह को हम बुध कहेंगे, दूसरे को शुक्र, तीसरे को पृथ्वी कहेंगे, चौथे को हम मंगल कहेंगे, 5वें को हम बृहस्पति कहेंगे, 6वें को हम शनि कहेंगे, 8वें को जो होता है यूरेनस कहेंगे, और 7वें को यूरेनस, और 8वें को नेपच्यून करेंगे। ये सभी ग्रह जो होते हैं ये सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के परितः जो होता है परिक्रमा करते हैं। तो जिस पाथ पर ये मूव करते हैं वह जो होता है एक इलिप्स दीर्घवृत्ताकार पाथ होता है, जिसको इंग्लिश में हम इलिप्टिकल पाथ करते हैं। उस इलिप्टिकल पाथ पर वो मूव करेंगे, तो उस इलिप्टिकल पाथ के जो होते हैं 2 फोकी होते हैं, उस दोनों फोकी में से किसी एक फोकी पर सन जो होता है सिचुएट होता है, उस पर सिचुएट मीन्स उस पर जो होता है लोकेट होता है, और अदर फोकी पर नहीं। सो उस फोकी के अराउंड जो होता है सन जो होता है, उस फोकी पर जो होता है सन जो होता है लोकेट होता है, और उस सन के अराउंड जो होता है वो प्लेनेट जो होता है मूव करता है। तो इस इंफॉर्मेशन को जो होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कक्षाओं का नियम। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली सॉरी आई विल आल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एरिया. Okay, now I am also going to erase this diagram, and second concept I will explain here in detail. Okay, now second point I will say, this is the law of area.
Law of area. What is the concept of law of area? Now here I will draw a elliptical path. I will draw here one elliptical path, and then I will use the Kepler's second law. Suppose that this is the electrical path, and here I will draw a major axis, and I will also take two foci. One foci will be F1 and other foci will be F2. Now, if planet which is available at the point P1, here I will say at point P1 there is a planet, and which is moving at the point P2. At the point that planet moves from point P1 to P2. So I have to say the this is the planet which is located at point P1, and this is also planet which moves from point P1 to P2. When I will join these 2 points with one foci, and then I will calculate its area. This is I will calculate the area of P1, F1, P2. I will calculate, and here I am saying I have taken time interval delta t, means at time t1 at time t1 that planet is available at point P1. Now it is moving t2 time, so it reaches at the point P2. So when I joined point P1 to F1 and also P2 to F1, so I have got a area, I have got a shape, and after calculating the area of that shape I have got a value. Okay, now I am considering here another point, that is P3, and a planet which is available at point P3. Now it moves from P3 to P4, from P3 to P4 point. So again I have jointed point P3 to F1 and I also F1 to P4. So I have also got a shape, and I have calculated the area of this portion. So after calculating, I have got information area area of the triangle, area of the triangle area of the triangle P1 F1 P2, P1 F1 P2, which is equal to area of the triangle P3 F1 P4, P3 F1 P4. I have got the area of this triangle and also the area of this triangle. Also I have got, in other words we can say that area of this shape and also area of this shape will be same. So this information we have got from Kepler. So if there is a electrical path, on electrical path a planet which is moving from point P1 to P2, and I have jointed point P1 to F1 and P2 to F2, I have got a shape, and after getting shape I have calculated area of that shape. I have got a finite value. Again, same instant of time, same time, in the time interval, in same time interval I have taken a planet which is available at the point P3, and it is moving from P3 to P4, that is covering same distance.
So I have also got a shape, and then I have calculated area of that set. I have got a finite value. So according to Kepler's law, both area will be same. So I have written here area of triangle, uh, area of triangle, that is P1 F1 P2, which is equal to area of the shape a triangle, that is P3 F1 P4. Both area will be equal. So this is the second Kepler's law. In other words, we can say that law of area. This is the law of area which is given by the Kepler scientist. Okay, so you have to also follow this information. If any, or if on any orbit which is moving a planet from one point to second point again in other time of interval, but time of interval will be same from third point to fourth point. So I will get two shapes, and after getting two shapes, so I will calculate separate area. So I will find they both shape will have the same value. It means that area of first shape which is equal to area of second shape. So here I can write area A1. This is the area A1 and this is the area A2. In other words, we can say that area A1 which is equal to area A2. This is the Kepler's second law. That is area, that is the law of area. Okay. So according to this way I can explain second Kepler's second law. Okay, so Kepler first law was very easy, because if any electrical path that has two foci, and if any planet which is moving around the sun, so sun will be at one foci of two foci of the ellipse. Okay, so already I have discussed with this topic with you. Okay student, if you have any doubt, so you can write your doubt point on the comment section, and then you send. After sending, study I will study your uh, query, and then I will give the appropriate solution of your question in detail. Okay student, so you have to follow it positively, and if you are understanding all these informations clearly, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also update their knowledge on this topic positively. Okay, now here I have already explained all these informations into English, so students who are reading in Hindi English medium are in CBSE board, those students can understand this concept in detail. This is very important topic, because this is also explained in the gravitation chapter. Okay, so in gravitation chapter, if two object we will take, and I will consider the distance between two objects, that is r, and each and every object will have mass can be equally or different according to the requirement. So here I am considering mass will be different, that is m1 and m2. So gravitational force will be in between both object, that will be F is equal to capital G m1 m2 divided by r square, where G is the gravitational constant, and it has value 6.67 into 10 to the power minus 11, that is Newton meter square divided by kg square. Okay, you have to follow it positively. Now I am going to translate all these informations into Hindi, so student who are reading in Hindi medium, those student can understand this concept in detail. Okay, now केपलर का द्वितीय नियम में कहा गया है कि अगर कोई भी ग्रह की मीनिंग होता है प्लेनेट, अगर कोई भी प्लेनेट जो होता है इलेक्ट्रिकल पाथ की मीनिंग होता है दीर्घवृत्ताकार पाथ में, अगर कोई भी ग्रह जो होता है मूव करता है, तो ऑलरेडी एक कन्फर्म है कि वह ग्रह जब मूव करेगा तो इलिप्टिकल पाथ के दो फोकी होते हैं। दो फोकी की मीनिंग होता है जो दो वहां पर फोकस होता है, दैट इज दो फोकी जो होता है सिंगुलर नाउन होता है, फोकस जो होता है प्लूरल नाउन होता है। तो दो फोकी में से किसी एक फोकी पर जो होता है वो सन रहेगा, सन का हिंदी होता है सूर्य, वो सन जो होता है एक ही फोकी पर होगा। अब जो होता है उस प्लेनेट को हमने कंसीडर किया कि वो प्लेनेट जो होता है वो ग्रह जो होता है पॉइंट P1 पर है, लेकिन वह
सेम टाइम आप इंटरवल पर मूव करके जो था P2 पॉइंट पहुंच गया, सेम टाइम इंटरवल से मूव करके जो तो P2 को पहुंचा है, तो इसलिए जो होता है हम पॉइंट P1 को फोकस F1 से और P2 को फोकस F2 से जब मिलाए हैं, तो मिलाने के बाद से इस शेप का हमने एरिया कैलकुलेट किया है। इस शेप का एरिया जो होता है A1 हुआ। इसी तरीके से जो होता है हम उसी प्लेनेट वही प्लेनेट जो होता है दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो होता है P3 पे है और P3 से मूव करके P4 पर गया है। जितना टाइम इंटरवल पहले शेप में था उतने ही टाइम इंटरवल दूसरे शेप में भी है। तो P3 को F1 से और P4 को F1 से मिलाए हैं, तो इसके बाद से भी एक शेप हमने पाया है। इस शेप का हमने कैलकुलेट किया है, एरिया A2 है। तो हम देखते हैं केपलर के दूसरे नियम से दोनों एरिया का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो दोनों मान क्या होता है, समान होता है। ये जो होता है केपलर का द्वितीय नियम होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशंस क्लियरली। ये सभी इंफॉर्मेशंस आप क्लियरली समझ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट पर अपडेट और डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, नाउ after explaining this concept, I will also explain third concept which is given by the Kepler scientist. Okay, now first concept को अगेन हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कोई भी प्लेनेट जो होता है, कोई भी ग्रह जो होता है दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर मूव करता है, तो उस दीर्घ वृत्ताकार के दो फोकी होते हैं। उस दोनों फोकिस में से किसी एक फोकिस पर सूर्य जो होता है, इस सूर्य जो होता है अवेलेबल रहेगा, वहाँ पर उपस्थित रहेगा और उस सूर्य के परितः जो होता है वो ग्रह जो होता है मूव करेगा। तो यह कंडीशन जो होता है, ये कंडीशन जो होता है, कहा गया है कि ये केपलर का पहला नियम है कि अगर दो फोकी में से किसी एक ही फोकी पर सन हो रहेगा और उसी के परितः जो होता है ग्रह का मूवमेंट होगा। ग्रह जो होता है 8 तरह के होते हैं, जैसे एक बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। इसके साथ साथ और होते हैं, दैट इज बृहस्पति और शुक्र होता है, बृहस्पति और शनि होता है। उसके बाद से यूरेनस होता है, यूरेनस के साथ साथ नेपच्यून होता है। ये सभी ग्रह जो होता है सूर्य के परितः, सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं, लेकिन यह इलेक्ट्रिकल पाथ पर मूव करते हैं। और उस इलेक्ट्रिकल पाथ इलिप्टिकल पाथ उस इलिप्टिकल पाथ को हिंदी में दीर्घ वृत्ताकार पाथ कहते हैं, उस पर वो मूव करते हैं। और उस दीर्घ वृत्ताकार पाथ के दो फोकस होते हैं, एक F1 और F2। इस दोनों फोकी में से किसी एक ही फोकी पर जो होता है सूर्य जो होता है उपस्थित रहता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो ये केपलर का पहला नियम था। केपलर का दूसरा नियम ये बताया है कि अगर कोई भी प्लेनेट P1 से P2 मूव किया, उसके करस्पॉन्डिंग एरिया हमने कैलकुलेट किया और दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो होता है P3 से P4 मिला, लेकिन जो टाइम इंटरवल P1 से P2 में लगा वही टाइम इंटरवल P3 से P4 में लगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा वो दोनों एरिया का मान जो होता है सेम होता है। दिस इज द सेकेंड केपलर्स लॉ। This is the second Kepler's law, or we can also say that law of area. Okay. Now third law, which is given by the Kepler scientist, that I will also explain. Okay. Now here I am going to erase this topic, and after erasing, I will also give the third law, that is the law of period. Okay, now I am going to erase it positively and then I will give its third concept. Okay, so you concentrate here on this video to understand its concept. That is, here I will explain third law, that is law of orbit, law of period. I will say this is the law of period. Now here again I will draw a elliptical path. I will draw a elliptical path. This is the elliptical path. I will draw the major axis. Now here I will say this is the major axis and this is the minor axis.
here I will say this is the one Foci and this is the Foci number 2. Okay, this is the orbital period, orbital orbital period. This is the orbital period. Now this is the center of the ellipse and it's, I will say this is the, here I will explain one planet, okay, that is moving around the sun. So this is the major axis and I will say this is the minor axis, minor, minor axis. This is the minor axis and this is the major axis. This is the major axis. Okay student, if you have any doubts, so you write your doubt point in the comment section and then I will look, and after looking I will give the appropriate solution of your query in detail. Okay, now here I will say law of period. It means that period square is directly proportional to a cube. This is the third. This is the third law of, this is the third Kepler's law, that is time period whole square is directly proportional to semi axis whole cube, cubic of semi major axis. Okay, so I will say its general formula of ellipse I have to write in standard form: x square divided by a square plus y square divided by b square, which is equal to 1. So this is the standard equation of the ellipse. So its center will be origin and its coordinate will be 0 comma 0. Now minor coordinate on the along the positive y axis I will write 0 comma b, and along the minus, that is the negative y-axis I will write here 0 comma minus b, and along positive x-axis I will write a comma 0, and along negative x-axis I will write here minus a comma 0. Okay, and focus I can write here a comma 0. E is the eccentricity of the ellipse. E is the eccentricity of the ellipse, and here I will also write minus a comma 0, because y coordinate on the x-axis will be 0 and x coordinate on the y-axis will be 0. According to those informations I have to write all coordinate point. So there are 5: 1, 2, 3 and 4, and other is 5, that is the origin. So all coordinate point I can write easily. Okay, now law of period is saying the square of time period, the square of period is proportional to cubic of semi major axis. Square of period is proportional to, या directly proportional to, या proportional to cubic of the semi major axis. Cubic of the semi major axis I can write, that is the square of period, the square of period is proportional to proportional to cubic of the semi major axis. Semi major axis. This is the third law of
period. This is the third law of period, या law of period, that is given by the scientist whose name is Kepler's. Okay, so first law already I have explained. If any electrical path that has two foci, and if any planet which is moving around, which is moving on the elliptical path, so sun will be at one foci of the two foci of the ellipse, because ellipse has two foci, so sun will be at one foci of two foci of the ellipse. Okay, so this information you have to know clearly. Okay, in Hindi I can also translate into in Hindi, that is, अगर कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह जो होता है इलेक्ट्रिकल पाथ पर मूव करता है, तो उस इलेक्ट्रिकल पाथ के दो फोकी होते हैं, एक फोकी का नाम F1, दूसरे को F2 कहते हैं। लेकिन जब कोई भी ग्रह मूव करता है तो उस दोनों फोकी में से किसी एक ही फोकी पर जो होता है वह सूर्य जो होता है स्थित रहेगा, और उसके अराउंड जो होता है वह ग्रह जो होता है मूवमेंट करेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट या कक्षाओं का नियम। इसको जो होता है कक्षा कहते हैं। ये जो ये पाथ होता है, ये ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट को हम कक्षा के नाम से जानते हैं, दैट इज इन हिंदी। ओके, नाउ केपलर का सेकेंड नियम क्या होता है? एरिया, लॉ ऑफ एरिया। अगर कोई भी प्लेनेट जो होता है किसी एक बिंदु पर जो होता है अवेलेबल है, और उस बिंदु से जो होता है दूसरे बिंदु पर मूव करता है, तो उसमें जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस मीन्स सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करता है, तो उस दोनों बिंदुओं को अगर हम किसी एक पार्टिकुलर फोकी से हम मिलाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक एरिया मिलेगा, एक क्षेत्रफल मिलेगा। उस क्षेत्रफल का वैल्यू जब दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो होता है हम फिर से दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिलाएंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो फोकस बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया बनेगा, सपोज कीजिए इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक एरिया लिया है, एक P1 था, एक P2 था, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको एरिया मिला, और दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमने एक पॉइंट P3 लिए और उसका मूवमेंट जो था P4 पर पहुंचा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने एरिया फाइंड आउट किया, ये दोनों एरिया का मान जो होता है क्या होता है? सेम होता है। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है, इस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं केपलर सेकेंड लॉ, क्योंकि केपलर ने इस इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया था, और उस ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एरिया 1 और एरिया 2 क्या होगा? बराबर होगा। तो केपलर के सेकेंड लॉ से एरिया 1 और एरिया 2 जो होता है ये इक्वल होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एरिया which is given by the Kepler scientist. So यह फिगर जो होता है केपलर के सेकेंड नियम को दर्शाता है। और यहाँ पर लॉ ऑफ पीरियड, इसका मीनिंग यह हो गया, जो टाइम पीरियड होता है, जो आवर्तकाल होता है, उस आवर्तकाल का होल स्क्वायर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस इलेप्टिकल पाथ का जो मेजर एक्सिस का जो सेमी एक्सिस होता है। सेमी एक्सिस का हिंदी होता है जो आधा दूरी होता है। टोटल दूरी 2a होगा, और आधा दूरी हमने एक कंसीडर करेंगे a। तो उस आधा दूरी के जो सेमी मेजर एक्सिस होता है उसके होल क्यूब के बराबर होता है। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। दिस इज द थर्ड केपलर लॉ। Okay, it is also called law of period. Okay student, I hope that all these informations which are given by the Kepler scientist you have already understood. Okay, if you have any doubt, so you write your doubt point in the comment section positively, and then you send. After sending, I will study your query या comment या doubt point, then I will give the appropriate solution of your question in detail. Okay student, so thank you for watching this live video. I will also solve some numericals which is based on this topic. Okay student, so thank you for watching this live video. I will always uh, give some type of concept in detail. Okay student, so you follow it positively. Thank you for watching this live video. Jai Hind, Rana sir.